So, good morning and welcome to another session. And today it will be slightly hard-hitting session. I'm glad none of my family members are here because anyways बहुत बदनाम हूँ मैं मेरे परिवार में and और बदनाम हो जाता आज. Okay, so let's get in touch with the reality of today's world. Okay, so I'm just going to show a picture to you, and this is the unfortunate reality of today's world. Can you look at the picture in front of you? What you can see? Anybody can see what is there in the picture? There are Elephant. six men. Yeah, one elephant and six men. Right. Anybody knows this story? क्या story है? These are six blind men and one elephant. Okay. No. They Chetan, are go ahead. So perceiving the I elephant in know their the own way. phrase, yeah. One at a time. Vishal. One Vishal. Yeah. What So is they this? are perceiving the elephant in their own way because they are not able to understand the whole elephant. That's what the story is Okay. all And this is the reality of today's world with respect to lifestyle and diseases. So those who don't know this story, मैं story short में बता देता हूँ. तो छह लोग हैं who lose their vision जिसने कभी हाथी देखा नहीं था. Okay. एंड उन छह को बोला जाता है कि हाथी को महसूस करके जस्ट फील द एलिफेंट एंड लेट मी नो व्हाट यू सी. ओके, उनको पता नहीं एलिफेंट क्या होता है. तो somebody touch the body of the elephant and बोला elephant is like a wall. Okay. Somebody touch the trunk, बोला it's like a snake. Somebody touch the dusk जो उसका tusk जो होता है that white portion and बोला it's a spear. Somebody touch the foot and it's a tree. किसी ने उसका rope पकड़ा and बोला sorry tail पकड़ा बोला it's a rope. So were they right or wrong? Who will tell? Right थे कि wrong थे वो? They were right in their, like knowledge which had the limited knowledge they had, they were right. Okay, so they were right and they were wrong. So this is the reality of the today's world. We know that it is wrong. They knew it was wrong. It was not because elephant cannot be a wall, elephant cannot be a rope, elephant cannot be a this thing. And we know that things that we are doing with us today, जो आज चीजें कर रहे हैं हम, we all know that these things are wrong. Yet we do it. So there is a good news, and there is a bad news also. It's very personal. उसके लिए मैंने बोला I'm glad none of my family members are here today. So my mother was diagnosed with breast cancer in March 2022. Okay, and she got her operated, and came out as triple negative breast cancer, which is very aggressive, and the chances of relapse is quite high. On top of it, she had liver cirrhosis for 12 years. Okay, so doctor told that chances of survival are very less. बहुत कम chances that she will survive, and if that cancer comes back within 2 years, then the chances of survival will go even less. Okay, and unfortunately, it came back in 6 months. September में वापस आ गया cancer. We were like devastated. Doctor was like, Manish, start counting your days. जो भी आखिरी इच्छा पूरी करनी चालू कर दो, and she won't survive much. We got again operated. It came back even worse form of cancer. उसमें भी there are certain grades and stages. I won't go into the details. It came out even worse this time. Doctors told we cannot give any medications because of our liver condition. Our platelets are low, WBC are negligible. No chemotherapy, no radiation. Okay. Allopathic doctors told that कुछ नहीं हमारे पास कुछ नहीं. But I knew that there is no condition in the world that cannot be cured. I started reading a lot about cancer, what are cancer cells, क्या होता है नहीं होता है, the cancer session that I took. So I took things in my own hands. I did a lot of research, spoke to people all over the world, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. And then I came across Sharan also. I was a teacher at Sharan. And there was this belief that yes, that cancer is not a disease which is the reason for her suffering. The reason for her suffering, कि उनके cells damage क्यों हुए, this is because of something called as oxidative stress. So जैसे हमने सीखा था ना inflammation. So everybody is clear what is inflammation? Inflammation सबको पता है, मैंने सिखाया था what is chronic inflammation, what is the root cause, and there are certain pathways in the immune system which doesn't behave normally, because of which our bodies try to protect us. Inflammation is a basically protective mechanism. Problem कब होता है? When it is chronically inflamed. Okay, so there is something called as oxidative stress जो होता है, मैंने पढ़ा कि there is something called as oxidative stress, that there are some free radicals in the body which we get from the environment. Okay, जो हम environment से हमें toxins मिल रहे हैं, those are damaging the oxygen molecules in our body, जिसकी वजह से certain free radicals are produced which keep attacking our cells and the cells get damaged. So I thought चलो doctors ने तो जवाब दे दिया, nothing can be done. Why not take things in my own hands?
And let's stop putting toxins into her body. कि जो भी टॉक्सिन्स उनके शरीर में जा रहा है वो स्टॉप करो. तो वी स्टॉप ऑल द प्रोसेस्ड फूड, ऑल द जंक फूड. वी केम टू नो दैट मिल्क इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. आई हैव टेकन मेनी सेशंस ऑन दैट व्हाई मिल्क इज बैड फॉर अस. तो शी वेंट completely whole food plant based. She started intermittent fasting. She started her green smoothies, daily green smoothie. And I started taking concept classes in the evening just because only for her. जो मेरे क्लासेस अभी मॉर्निंग में होते थे 15 मिनट के सेशन, शी कुड नॉट अटेंड इन द मॉर्निंग बिकॉज शी कुडंट गेट अप अर्ली. तो मैंने उनके लिए शाम को क्लासेस चालू की. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर जनरल हैप्पीनेस. I took that for 6 months non-stop only because for my mother. And September 2023, 1 year after the second surgery, doctor felt something again in her breast. Doctor told that Manish, maybe it has come back. Let's do a surgery. There is no other option. And we did a surgery, and this time it came out as negative. Doctors were like amazed. Like, how can this happen? It was a triple negative breast cancer, no medication, nothing you have done. It came back negative. And people won't believe me that what I did, what we did together, that she followed a super clean diet, super healthy mindset, lifestyle, exercise. We got a physiotherapist for her. It didn't came back. My prediction was that at least 5 to 7 years, nothing will happen. And if she follows this routine, kuch nahi hone wala hai. Yesterday, we went to the doctor again. Okay, my mother was having some symptoms, some pain. Doctor, मुझे pain क्यों है? 7 times doctor told exercise. 7 बार उनको बोला exercise, go out in the nature, go to temples, be happy, forget that your disease, you are out of it. This was doctor's word. You are out of it. It hasn't come back. I cannot feel any nodule. You can check it. You can do the USG. So is it good news or bad news? Obviously, it's amazing news. We were like so happy. My mother was like, wow. I came back out of the room and told my mother, you won't survive for maybe 1 or 2 years. Well, why? Well, you have again started your tea. I see you having tea. I see you having outside food. Green smoothie जो आप पहले वीक में 7 बार लेते थे, अब 1 या 2 बार आप लेते हो. You do all the wrong things. You are not exercising regularly. Physiotherapist आपने छोड़ दिया. You don't go out in the sun anymore. So my prediction is that she won't survive for more than 1 or 2 years now. If she is on this track now, because she has changed tracks, she's become lousy. She doesn't do. मैंने बोला ना family members नहीं, I'm happy that no one is there today, because you cannot do the wrong things and expect the right outcome. It's a very foolish thing. It's like that elephant thing जो मैंने बताया आपको कि everybody thinks that I'm doing the right thing. कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है. This is just the wall. This is just the tail. This is just the rope. This is just the spear. This is just, what are we doing? And my concern is not my mother, frankly. She is not a kid कि उनको बोलना पड़ेगा why healthy eating is important. My concern is not पंकज भैया, जिनको समझा समझा के मैं 2 साल से थक गया कि obesity, why obesity is bad for you. It's a ticking time bomb. My concern is my kids, what they are taking in the tiffin, because that will impact their health. So my request to all of you today is, don't be that blind, 6 blind men. अंधे मत बनिए. देखिए हमारे चारों तरफ हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं. This was not the case 25-30 years ago. Diabetes is becoming common in kids. Cancer, heart disease, these are all preventable conditions. We are on a mission. ये समझिए, we are on a mission to save our children. At least we can save our children. Though they don't know. बच्चों को पता नहीं है what is right, what is wrong. We as parents have responsibility not to get junk food in our house. क्यों हम वो मिठाई लेके आए? शक्कर मालूम है that sugar feeds cancer cells. Cancer cells love sugar. Why do we need to get that refined stuff into our homes? Why are we getting those chips and biscuits कि बच्चा है तो खाए दाई? Let's save our children at least. हम बच्चों को तो बचा सकते हैं at least, जिनको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है. And believe me, when you start following the right things, scientifically proven that your chances of getting chronic diseases like diabetes, type 2 diabetes, cancers, heart disease, 80% chances come ho jate hain if we follow the right diet, lifestyle. So few things we need to be careful of. First is your fingers. Fingers matlab kya? Don't smoke. Your cell phone usage, very important. Cell phone usage मैंने खुद ऐड किया. This I didn't learn from anywhere, because this cell phone is creating havoc in our lives. In what ways? Social media, frequent, how much the time we spent on social media, it's like hell. It's creating life hell for us. It's creating a lot of mental health conditions which manifest in the form of physical diseases also. So manage your cell phone usage, shut it off after 8 p.m. It will do wonders for your mental health. It will do wonders for your sleep. बिकॉज स्लीप में हमारी हीलिंग होती है. हमारी जो हीलिंग होती है, भगवान ने टाइम पास के लिए स्लीप नहीं बनाया.
There are certain mechanisms which goes on psychological level and the physical level also, where your healing happens during sleep. Try and go to bed latest by 10. 10 is the latest, I'm telling, not the earliest. Okay. Try to go. See, these are very, very simple things I'm telling. These are not rocket science. These are inexpensive things. These things are in your hands. We can gradually change our routine. एक साथ नहीं कर सकते, धीरे धीरे तो हम कर सकते हैं ना, धीरे धीरे तो हम कर सकते हैं. तो फिंगर से हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप स्मोकिंग. अगर कोई स्मोक करता है, आई एम श्योर नोबडी स्मोक्स हियर. या हम जो तंबाकू खाते हैं, जो टोबैको खाते हैं, जो हमारे गुजराती भाई यहाँ पर हैं, जो बहुत प्राउडली वो फाकी खाते थे एंड बोलते थे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. एंड मोस्ट ऑफ द गुजरातीज आर गेटिंग दिस कैंसर्स इन देयर 50s नाउ. इट्स सो कॉमन इन गुजरात गेटिंग अ ओरल कैंसर. हाँ जास्मिन भाई, कॉमन है कि नहीं? जास्मिन भाई आप हैं यहाँ पे? देयर इज अ गुजराती फ्रेंड, मेरे फ्रेंड है गुजरात से. जास्मिन भाई आप हैं यहाँ पर? या तो जास्मिन भाई, ओरल कैंसर कितना कॉमन है अगर गुजरात में? माउथ कैंसर जो होता है कितना कॉमन है? सॉरी, आवाज नहीं आ रही. थोड़ा पास आके बात करेंगे? थोड़ा पास आके बात करेंगे. मेरे आ रही है सर आवाज? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी. हाँ. हाँ, तो मेरे हिसाब से शायद 70 से 80% गुजराती खाते हैं तम्बाकू। और कितना कॉमन हो गया ओरल कैंसर जेतपुर में? माउथ कैंसर कितने लोगों का मुंह मुंह का गाल कटा हुआ देखते हैं? नहीं, वो तो मालूम नहीं है। नहीं, वो मालूम नहीं सर। यस, तभी तो मैं बोला ना, हम वो आते, हम वो अंधे बन गए हैं जो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. ओरल कैंसर इज सो कॉमन. अगर आप नोटिस करेंगे जास्मिन भाई, आप जस्ट फैक्ट्री आते हैं, आपको पता नहीं. मेरा तो ये काम है. इट्स सो कॉमन दैट माउथ कैंसर जो होता है ये. ओके. एंड स्लीप सेकंड बोलते हैं ना, सेल फोन को मैनेज योर सेल फोन यूजेज. ओके. सेकंड इज योर फोक्स मतलब व्हाट वी पुट इनटू आवर माउथ. हम जो खा रहे हैं, मैं बोलता हूँ वी आर डिगिंग अवर ओन ग्रेव विद अवर ओन माउथ. दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, दैट वी पुट एनीथिंग. ये तो कचरे का डब्बा है, अंदर डाल दो यार. ये मिठाई आई डाल दो, ये तलावा है डाल दो, आज तो फेस्टिवल है डाल दो, आज तो बर्थडे डाल दो, आज तो पूजा पाठ है डाल दो, आज तो कोई मरा तो डाल दो. मेरा शरीर तो बस फ्री का है, पिक्चर हॉल में गए तो डाल दो, गाड़ी में तो डाल दो, वेकेशन है तो डाल दो. अभी मेरे घर में अनुषा आई है ये, तो दे आर लाइक वाह, हम तो रेस्टोरेंट जाएंगे, कोई बाहर से आया थोड़ी घर का खाना खिलाएंगे. खिलाओ, जहर खिलाओ. शी हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टे विथ मी फॉर 5 days, लर्न माई लाइफस्टाइल, लर्न माई मॉर्निंग रूटीन, लर्न माई इवनिंग रूटीन, बट शी चोज द अदर वे अराउंड. आई एम हैप्पी दैट शी इज नॉट देयर इन टुडेस क्लास. मनमोहन जी कुछ नहीं बोलेंगे उसको. ओके, प्लीज डोंट लेट. Okay, it's her life. She is an adult. She has the choice. So they had the choice to eat healthy, learn few things. Vishal मेरे घर पे आया 6 months ago. He learned a few things and he reversed his thyroid. He reversed his blood pressure. He lost 15 kgs of weight. So you have a choice. So Vishal had a choice. वो भी घर में आके he could have learned the wrong things. मेरे घर में आके एक ही घर में दो तरह के लोग रहते हैं, एक मैं हूँ और एक बाकी परिवार है. सुनने को तैयार नहीं है. They take 10 to 15 medications every day. एंड हियर आई एम. 8 साल से डॉक्टर का चेहरा नहीं देखा, 15 साल से कोई दवाई नहीं ली. ओके, तो यू कैन चूज. तो अनुषा हैड अ चॉइस कि क्या फॉलो करना है, एंड शी चूज द अदर पार्ट. ठीक है. यू आर दैट ब्लाइंड पर्सन फीलिंग द एलिफेंट. यू डोंट सी द रियलिटी. एंड हियर शी वाज इन द मॉर्निंग, भैया मुझे चक्कर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, व्हाट द रीजन? लाइफस्टाइल इज द रीजन. यू डिडंट स्लीप, यू गाइस स्लेप्ट लेट. सो जाओ, 2 घंटा सो जाओ, ठीक हो जाओ, डोंट वरी. तो चक्कर आपका ठीक हो जाए. सी, हर चीज का इलाज दवाई नहीं हो सकता कि मुझे चक्कर आ रहा है तो मैं कोई चक्कर की दवाई ले लूं, मुझे सर दुख रहा है तो मैं क्रोसिन ले लूं. Go back to the cause. Last 5 days, what you did, I saw you was wrong. You ate at 9:30 yesterday. It was wrong. I told her. I was being blunt. Why should I do sugar coating? You follow wrong things, result will be wrong. गलत चीजें करोगे, गलत होना ही है. So what you put into your mouth has a lot of impact at the cellular level. Your cells are constantly regenerating. आपके cells constantly regenerate हो रहे. डाइट होना चाहिए मोस्टली होल फूड, प्लांट बेस्ड. इनफैक्ट 100% हो तो नथिंग लाइक इट. इफ यू कैन फॉलो इट, बी ग्रेजुअल विथ योर चेंजेस. एक साथ बहुत ज्यादा बदलाव करने का कोशिश भी मत करिए. बट यस, इफ यू आर ओबीस, अगर आपने मोटापा है, देर इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब विद इन यू. इफ यू आर लकी तो छोटा छोटा वेकअप कॉल आएगा इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज, इन द फॉर्म ऑफ, मैं इसको छोटा वेकअप कॉल मानता हूँ आजकल, इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज बड़े बड़े वेकअप कॉल्स भी आजकल 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल में हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन आ रहा है, लूपस आ रहा है, PCOD, PCOS, ankylosing spondylitis, arthritis. These are happening to our kids. एंड डॉक्टर्स के बाद जाता है क्या बोलते हैं? देयर इज नो रीजन, इट्स ऑटो इम्यून, इट्स जेनेटिक. अरे जेनेटिक है, यस इट्स जेनेटिक, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एपिजेनेटिक्स. वी कैन इम्पैक्ट थ्रू अवर लाइफस्टाइल, थ्रू अवर चॉइसेस. वी कैन इन्फ्लुएंस द वे इन विच genes express themselves.
जो जीन्स है वो किस रूप में मैनिफेस्ट करेंगे वो हमारे हाथ में। तो मेरे अगर जेनेटिक्स देखेंगे, बोथ माय पेरेंट्स आर ओबीस, एम आई ओबीस? अगर मैं भी उल्टा सीधा खाऊं, आई ईट ऑल द पिज्जाज एंड द बर्गर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल द जंक, एंड मैं बोल दूंगा यार मेरी गलती नहीं है, बिकॉज माय पेरेंट्स आर ओबीस सो आई एम ओबीस। You can alter the expression of your genes through your diet. Believe me, it's a science. It is known as epigenetics. You can read on the internet. It's a science, epigenetics. So don't blame your parents for your condition. Genetics have a certain role, but you can influence how it expresses itself. Be very mindful of what you put into your mouth. It's very, very important. First are your fingers. Second क्या था? Your forks, what you put into the mouth. And third is your feet, the amount of exercise that you do. Again, very important, we are not meant to lead sedentary lives. Sitting is the new smoking. So aim for moderate 45 to 50 minutes exercise 5 to 6 times in a week. At the same time, be active throughout the day. पूरे दिन अगर बैठे रहेंगे, it's worse than smoking. You invite a lot of physical ailments just because of being sedentary throughout the day. हर 1 घंटे में 1.5 घंटे में रिमाइंडर्स रखिए, 500 से 1000 स्टेप ही चलना है, ज्यादा नहीं चलना है। एक दिन में 5 से 7 हजार स्टेप भी आप लॉन्ग टर्म में चले ना, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो फिंगर्स में क्या, डोंट स्मोक, टोबैको छोड़ दीजिए आप। सेकेंड इज what you put into your mouth, very important. Stop all processed junk food, especially जिनके बच्चों को बीमारियां हैं। यहाँ पर मैं जानता हूँ कुछ लोगों के बच्चों को भी बीमारियां हैं। प्लीज stop getting junk into your house. It will just aggravate the autoimmune condition. It is so bad for your child. मैं तो बोलता हूँ सब लोग बंद करिए। मतलब इफ यू केयर फॉर, इफ यू लव योर चिल्ड्रन, समझ जाएंगे वो। घर में नहीं आएगा ना तो नहीं खाएंगे, 2-3 दिन जिद्दी करेंगे, कुछ करेंगे, फाइंड आउट हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। हेल्दी ऑल्टरनेटिव सब जगह है। मेक द हेल्दी फूड टेस्टी, मेक इट सुपर टेस्टी, लर्न टू कुक टेस्टी फूड्स, टेस्टी मील्स एट होम। आवर चिल्ड्रन डिजर्व अ बेटर फ्यूचर, बिकॉज आगे जो बीमारी होने वाली, हम तो चले जाएंगे, बट व्हाट आर वी लिविंग फॉर अवर किड्स? कोई चाहेगा हमारे पोते पोती, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको 10-15 साल में डायबिटीज हो? We have the power to control that through our own lifestyle. No, don't go and preach to anyone. Just start following a healthy lifestyle first. आप पहले खुद तो करो। आपको देखा देखी स्मॉल चेंजेस आएंगे, those changes come. एंड जिनके घर में ज्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको आप दिखाओ मत, वो दुनिया दिखानी नहीं है। जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको दुनिया आप दिखाओ मत कि क्या दुनिया होती है। बिकॉज दिस स्टेटस को वो बोलते हैं ना, स्टेटस को, कि बच्चा तो खाएगा ही, थोड़ा बहुत तो चलता है ये, दिस स्टेटस को विल कॉस्ट अस डियरली इन फ्यूचर, in terms of money, in terms of what we are doing. Glad my sister joined now. Yeah. Yeah, Poonam, thank you for joining late today. It was a blessing in disguise, because many things many people wouldn't have liked today. Okay. So this Sorry. status, no, I'm very happy. I'm very happy. I was just wishing nobody from the family joins today. So you see the recording why I told you. Okay. So this status quo जो होता है ना, ये कि जो सब कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं यार, हम कौन सा अलग कर रहे हैं यार? तो you will suffer what others are suffering. If you are ready to bear the cost of status quo, ठीक है। तो I could have, like, if I followed my wrong lifestyle, doctor told me hip replacement, doctor told me this, medicines, daily medicines, तो अभी तक मैं lakhs and crores खर्चा कर चुका होता मेरी बीमारियों में, डॉक्टरों में, डॉक्टर्स के विजिट में, and everything. But then an ounce of prevention is worth a pound of cure. It's your life is in your hands. It's so powerful. So believe me, it is so easy. मतलब these concepts. So when my mother started following the right lifestyle, कैसे उनका अभी तक कैंसर एक्सप्रेस नहीं किया वापस? Doctor told that she is out of it, and now the lifestyle that she's living for the past 2 months again, I'm very sure that she will get it again. I'm not being a nocebo for her, but that's the truth. That if she has tea, जैसे my sister came, Poonam, she's here. She came to my house. She came with a box of nashta, or that junk food, I would say. Sorry, Poonam, to say that. 4 दिन पहले मेरे घर पे आए, बच्चे तो खाएंगे that samosa and the dhokla and the oil wala patra and everything, all the junk stuff that came to my home. My kids were carrying Maggie in the tiffin. What are we giving to our kids? Like, you are giving autoimmune condition to your children. That's the truth, because you cannot do the right, you cannot eat the wrong food sometimes and say कि मुझे कुछ नहीं होगा. There is a cancer patient in my home. They should not come in my home at all. We have to understand this fact.
एंड कैंसर पेशेंट नहीं है तो क्यों हम कैंसर का आने का वेट करें, उसके बाद हम घर में लाना ये बंद करें, जंक फूड लाना बंद करें घर में. These are not meant for my mother to be eaten, and she eats it like चलेगा. डॉक्टर बोलते हैं मैं तो दही के बिना रह नहीं सकती. अरे यार, that contains that hormones जिससे breast cancer aggravate होता है. ये जो काऊ का मिल्क होता है, what does cow milk contain? They contain the same receptors for breast cancer which a patient has. But I cannot live without curd. But it's not rocket science. You can make curd out of peanuts. You can make curd out of cashews. So many alternatives are there. But we are not ready to listen. In the name of moderation, we are killing our parents. We are killing our children in the name of moderation. So let's बोलते हैं ना, make choices consciously. Consciously आप choices करिए because you are responsible. हम सब responsible हैं. For what? Not only for our own health, not for the health of our children. मैं तो बोलता हूँ we are all on a mission to save the world. आप ऐसा समझिए. How? आप बोलेंगे how to save the world? The kind of healthcare budgets that our government has. And that is not a healthcare budget, that is a disease care budget, I would say. And that is all because of wrong choices what we make as citizens of this country. If we start making the right choices, our hospital visits will come down. The cost of healthcare, the cost of disease care will come down. And the rate at which the diseases are increasing, believe me, countries will go insolvent just because of healthcare costs, just because of cost of doctors, the cost of medications. कैंसर का ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बताया कल 25,000 से 30,000 लगता है कीमोथेरेपी का. एंड कैंसर इज अ प्रिवेंटेबल कंडीशन. वी कैन स्टॉप पुटिंग कार्सिनोजेन, जो हमने सीखा था. वी कैन स्टॉप पुटिंग जंक फूड इनटू अवर बॉडी. दैट फ्राइड फूड, दैट मिठाई क्या करता है अंदर जाकर. तो थिंक ऑफ यू दैट यू आर ऑन अ मिशन टू सेव दिस कंट्री, यू आर ऑन अ मिशन टू सेव दिस वर्ल्ड. वी कैन डू दैट. इट्स ऑल स्टार्ट्स विथ यू. आप खुद को तो बदलिए पहले. इतना सुनने के बाद बोलता हूँ ना, अंदर का खून खोल जाना चाहिए आपका. जो रंग दे बसंती में एक बहुत फेमस डायलॉग था, जो उसमें सम फ्रीडम फाइटर ने बोला था कि अब भी जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है. दिस शुड बी रिप्लेस नाउ बिकॉज देयर इज नो imminent danger to the country now. India is like defense systems are very strong and नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, that nobody can attack us. But we are like बोलते हैं ना, हम खुद धीमक बन गए अपने देश के लिए. हम खुद धीमक बन गए. तो मैं अब इसको रिप्लेस करूंगा कि बोलते हैं ना, जो जिसका खून नहीं खौला आफ्टर दिस 20 मिनट टॉक, तो वो खून नहीं पानी है. अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखो ना, वो बेकार जवानी है. Start taking care of yourself and believe me, see the change in your physical health, your mental health, your energy levels. 4th September से non-stop I am taking classes, 4 to 5 classes a week. Non-stop I traveled. कहाँ कहाँ नहीं घूमा मैं. 8 months में 4 months I was traveling. I didn't put one junk food into my body because I know what it does to myself, my body. Not a single अगर सर्दी खांसी, no fever, no doctor visits, no पेट गड़बड़. My father told me, मनीष मेरा 2 हफ्ते से पेट खराब नहीं हुआ. उनको क्रॉनिक, उनको गैस्ट्रिक इश्यूज रहते थे, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या ये. 2 हफ्ते से मेरा पेट खराब क्यों नहीं हुआ? 2 हफ्ते से मेरी सुन रहे हैं, जब बेटा कॉर्नेल एंड आईआईएम पढ़ के आ रहा है तो अब थोड़ी मेरी कीमत बढ़ गई है मेरे डैड के लिए. तो ही स्टॉप टी. उन्होंने ग्रीन टी से रिप्लेस कर दिया. ही स्टार्टिंग हैविंग डिनर अर्ली. थोड़ा उन्होंने कैलोरिक इंटेक कम कर दिया. दैट्स इट. बोलते मेरा 2 हफ्ते से पेट खराब ही नहीं हुआ, मुझे एसिडिटी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. कैसे हुआ? मैंने बोला करते रहिए. जस्ट फॉलो सिंपल लॉजिक. देयर इज नो रॉकेट साइंस. दैट योर बॉडी इज लाइक हीलिंग फ्रॉम विद इन. If he can heal, I can heal, so many of us can heal. We all can do that. And Poonam, next time please mom का condition ध्यान में रखो. Please don't get all these things into the house because we all want her, because there is no replacement for a mother also. जैसे मैं बोलता हूँ ना कि यार son का कोई replacement नहीं है, इसका कोई replacement नहीं है, because these things are not meant for her to be eaten. Maybe वो समझ नहीं रहे, maybe that mind का control नहीं है, but at least if we stop getting that stuff ना, तो we can reduce the proportion of things that she's eating. Because anyways traveling होता है, थोड़ा बहुत खाना हो ही जाता है. Anyways if you go to a social engagement, somebody हो ही जाता है. But at least consciously we should not get these things. And this is not only for my sister, this is for every one of you, because I don't consider my family is my family and you guys are the, otherwise the service की भावना आती नहीं है. Because Vedanta say that we all are connected at an invisible level. It's not that she's my mother to mera and you are different and Ekta is different and Pooja is different and Manmohan ji is different. I all care for you. It's a duty as as a teacher to explain you the right things. So let's bolte na wage a war on junk food, on processed food and the
fingers and the forks and the feet and everything that we are learning through these classes, and the sleep factor and the stress factor and why music is important, मैं क्यों बोलता हूँ. So there is a reason behind everything. These are like years of research that I've done, years of study that I'm still doing, just keep improving on myself, and you guys can do it for yourself too. अगर मैं ठीक हो सकता हूँ, if I can recover, anybody can do it. I was in such bad physical state 16 years ago. My sister knows here. Everybody was like, Manish ठीक क्यों नहीं होता है? Manish को क्या हो गया? इसको क्या हो गया? Because I was doing all the wrong things. You can also do that for yourself and do it for your kids. मैं तो बोलता हूँ किसी के लिए करिए मत करिए, अपने बच्चों के लिए आप करिए ये जो हम सीखते हैं. ठीक है. So let's start with आज हमको करना है some green zone practices. So this is very good for everyone. So don't think कि आपको बीमारी है तो ये आपको करनी चाहिए ये. Again, don't wait. तो green zone practices क्या होते हैं? Wherein we activate our parasympathetic nervous system. हम जो करते हैं ये